Okay, we'll start here. Okay, I'll not wait more again. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, yes. Please confirm. Okay, thank you. Okay, so yesterday we have started the inheritance concept, one of the oops concept. Okay. Again, we will discuss the same and we will proceed. Okay. Exactly what is the motto here to study the inheritance is, see, we have observed like अगर हमको एक क्लास से किसी भी अदर क्लास में कुछ मेथड यूज करने हैं तो हम क्या कर रहे थे उसके पहले we were creating the object of that class, and then by using that object we were calling the methods. Okay, so what is the requirement here? We need to create the object of the class. Okay, मान लीजिए कि मुझे एक क्लास की प्रॉपर्टी या मेथड्स को कॉल करना है, यूज करना है किसी अदर क्लास में, तो मुझे ओरिजिनल क्लास का, जिस क्लास में वो मेथड एग्जिस्ट है, उसका क्या बनाना था? ऑब्जेक्ट बनाना था. ओके, बट मुझे मान लीजिए कि 50 क्लासेस का यूज करना है उस मेथड का. ओके, सो उसका मीनिंग ये था कि मुझे 50 क्लासेस में ओरिजिनल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा 50 टाइम्स. ओके, एंड बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट आई नीड टू कॉल. सो up to 10, 50, 100, okay, we can follow some standard rule like we have to create an object and we have to call the method. But अगर ये क्लास का नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, so it's not easy to prepare the object each time, है ना? तो इसलिए कंसेप्ट आता है इनहेरिटेंस का. ओके, सो इनहेरिटेंस में हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके उस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकते हैं किसी अदर क्लास में. ओके, और इसका मीनिंग ये बनता है कि बस मुझे एक ही बार उस ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा. आई जस्ट नीड टू क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट फॉर वन टाइम. ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा बट ओनली फॉर वन टाइम. ओके, सो लिसन द केयरफुली. मैंने पहले बनाया क्लास विथ नेम एज अ कार. नाउ ये है आपके क्लास की बॉडी complete. Okay, up to here again I have to give one more. यहाँ तक, यहाँ से लेके ये आपकी कार क्लास की बॉडी है. तो इस ब्रैकेट के बाद क्लास जो है कार, ये खत्म हो जाएगा. ओके, उसका एग्जिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है. फिर इस क्लास में क्या है? कुछ मेथड्स है, विच मेथड्स लाइक कलर, कुछ स्टेटमेंट होंगे उसमें. फिर आओगे और एक मेथड है व्हील मेथड, उसमें भी कोई स्टेट्स होंगे. ओके, अब मुझे इन सभी मेथड्स को यूज करना है किसी अलग क्लास में. दैट इज अगेन आई एम क्रिएटिंग वन मोर क्लास ए. ओके, सो टू यूज और टू acquire the properties of this class I am using one keyword as a extends. extends कीवर्ड यूज कर रहा हूँ. उसके बाद किस क्लास से आपको उसकी प्रॉपर्टी चाहिए. ओके, सो we have to write the name of that class. Okay, that is car. Okay, that is car. Now what will happen? I needed to create the object of this class A. Okay, so as per the syntax I am going to create the object of this class. I am giving the variable name as A. Now I am ready to call the methods of this car class. Okay, these methods are considered like color or will. Okay, now I have created the object of this class A, and I'm calling these methods from another class, parent class. इसको हमने एक्सटेंड किया है, that will be the parent class. और इस क्लास में भी कुछ मेथड्स होगी, that is for example ABC is one of the method in class A. Okay, no worry. Now this is the example of single level inheritance. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब भी सिंपल है. एक क्लास की प्रॉपर्टी किसी अदर क्लास में मैं एक्वायर कर रहा हूँ. इट्स वेरी सिंपल. जस्ट वन क्लास इज गेटिंग सम प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड फ्रॉम वन अनदर क्लास. मतलब यहाँ पे दो ही क्लास का कंसेप्ट होना चाहिए. ओके, देयर इज द कंसेप्ट ऑफ ओनली टू क्लासेस, नॉट मोर देन टू क्लासेस. ओके, क्लियर है? एटलीस्ट SLI क्लियर है?
सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, इसमें कोई डाउट है? Yes, no. No, sir. Okay. So we'll see on the Eclipse, okay, how to code for this. Now, see, I have created one package, okay, package name as inheritance example, okay, exp. In that, again, right click, create a new Java class. This is the option, okay. I'm creating one class. Okay. I'm giving it as a class name, for example, B. Simple. Okay. I'm giving the class name example B. Okay. Here we have getting the class B under the package created inheritance exp. The same name which I have given here. Okay. Okay. Now I required one class. Okay, from which I will get some property. है ना? इसको मैं क्या कहता हूँ? Parent class. So I will create a class. Sorry, I will create a class A. Okay, I am creating one class A. I am giving its body now. ये है आपका class A. अब इसमें मैं body दे रहा हूँ. Okay. So I have to define one method in that class. So I am defining one method. Public void and any method name we want. Okay, if I'm giving as a test is one of the method. Okay, again method body, I will give method body from here. Okay, I need to print some statements. Okay, like hi. Okay, again one more statement, for example I'm writing like this is the parent class. Okay, और इसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं. ओके, बट इज अंडरस्टैंडिंग, कंसिडर दिस एज अ पैरेंट क्लास. Okay, now see, I have created one class A here. Its body is from this to this, from line number 3 to line number 9. Okay, okay, this is the class body A. In that I have created one method, test method, and in that test method I have some statements to execute. Okay, now come into the class B. Now what is my motto? I want to use this test method in class B. I want to use this test method in class B. Okay, so what is the option here? I need to create an object of class A and then I need to call it. Okay, but here we are dealing with the inheritance. So to implement the inheritance we are using the keyword as extends. After that we need to give the class name. जिस क्लास की आपको प्रॉपर्टी चाहिए, किस क्लास की चाहिए? मान लीजिए पेरेंट क्लास ए. ओके, पेरेंट क्लास ए. ओके, now what I will do is I will create the object of this class only, this class. So how we can create the object? Class name then object reference is equal to Object new. reference, okay, is equal to new keyword, again the class name, brackets. Okay, correct. Right. Okay, I will call that class now by using the object created sorry s dot. Okay, I'm not getting that class, sorry, methods. Is there any reason? I have created object s dot. If I will give dot, I should get that methods. Is there any reason which we are not getting it?
To execute here, we need the main method. Okay. So what is the syntax for main method? Public static void main in bracket strings args. Okay. So we have created object. Okay. Now I want to call the methods from the parent class. So we have many predefined method. Okay. We have many predefined method, but I want to call method test, which you can see here, right? Test method, which is present in class A. Can you see this? Yes. Yes, sir. So I can call that method. See, there is no error. Okay. So if I will run this, what the output I will get? Whatever the methods I am calling from class A, that is parent class, right? Like hi, this is the parent class. Now see here, we have created the object of this class, my dear, class B. But I'm using the keyword extends and the parent class name, like class A. Now, because of this extends, what it will do, it will try to acquire all the properties from class A, and we can use any method, any variable from the class A very easily. So it's a SLI, it's a single level inheritance. इसमें कोई डाउट है how it is getting? Is there any doubt for this? No, sir. No. Now next example was the MLI, that multi-level inheritance. Okay. Now again we will see the same example. Here we have one class car in which we have some defined method, user defined method, color, wheels. Now I have one more class, class A, है ना? अब मैं यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ because I am treating it as a one of the individual class. Okay, one of the individual class. अब class A में भी एक मेथड है ABC मेथड which have some statements. आपकी क्लास की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है. Okay, class A की बॉडी. Again I have one more class, class B. I have one more class, class B. Now in this class B, I want to acquire the properties of class A and class B. Class A and class B. Now what will happen? If I will inheritance, like I will extend all these two classes means, for example, here class A, this class A extends car class. Okay, sorry, car class. Again this class B extends A class which is already created. Simple means in class B I can get the methods from class A as well as class car, right? So here in class B I will create just one object of class B only. Okay, for example, what is the syntax to create the object? For example, class name B, anything as a variable is equal to with keyword new class name B and this one. Now see, by using this object S, I can call any method from the previous classes like class A or class car. So here by using the object S, I can call any method. For example, it is from the car class, it will be the color. Okay, or example, I can also call second method as a will, that both are from class A. Okay, sorry, class car.
नाउ सेम फ्रॉम सेकंड क्लास कार ए में कौन सी क्लास ए में कौन सी मेथड है ए बी सी. Okay, I have created the object of class B, but I can use the methods of previous classes just by creating one object. So again S dot ABC. Now here what happening my dear? See, क्लास ए में मैं कार की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ. अगेन क्लास ए में मैं क्या कर रहा हूँ कार की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ और क्लास बी में मैं क्लास ए की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ. इनडायरेक्टली class B will have the properties from both classes, class A and this class car. So multi that it's called as what? MLI. It's called as a multi-level, like level 1, level 2, level 3. Simple example like this is the grandparent, this is the parent, and this is the grandchildren. So ultimately, the grandchildren will have the properties from both their parents as well as their grandparents. Okay. So this is what like concept wise. Again, now we will see on the eclipse. Okay. This example which we have seen now, it belongs to SLI, single level inheritance. एक क्लास की प्रॉपर्टी मैं एक क्लास में यूज कर रहा हूँ by using the extends keywords. That's why I'm implementing the inheritance. Okay. Now in same package I'm creating again one more class. Okay, I'm creating one more class. Consider that class name as A. Okay, consider that class name as A. Okay, we have created one class. Okay, class name A. Okay, we have already defined one class, that's what is okay. No issues. I will create one more class. New. Okay, class C. Okay, so this is not present in the this package. Okay, class A is package में था, that's why it is giving an error. Okay, now I have created one class C. Here I will specify two variables. Okay, like int data type, sorry, int data type. Any variable name you are giving A is equal to 10. Okay, again one more variable int B is equal to 20. Okay, in the class C which I have created, उसमें मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल बनाए. Okay, okay, I want to create one method also. Okay, so I'm making public void any method which you want to name, like m1. I'm giving one method. I want to specify some sentence in this method. Okay, that is simple. As of now I will try. M1 method is executed. Okay, सिंपल. आई हैव क्रिएटेड वन क्लास. ये है आपकी क्लास की बॉडी जो हाईलाइटेड है. इसमें मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं ए एंड बी एंड वन यूजर डिफाइंड मेथड m1 which having some statement to print. Okay, now I will create one more class. I will create one more class, class D. Now in this class I want the methods or we can say data types from this class C. So what I will do here, I will use the keyword as extends. For which class? Extends of which class? This previous class C. Okay, this previous class C मतलब इस क्लास D में मैं इस क्लास C से जितने भी मेथड्स या
ये है वेरिएबल्स, उनको मैं यूज करना चाहता हूँ. I want to use this. Okay. Now what I will do, I will again create one variable here. Okay, int x is equal to 30, for example. Again int y is equal to 40, example. Okay. So these variables belongs to this method. Sorry, this class D. Okay. Okay. Now here I want to again create one method for this class. Okay. So this public void, I'm using one method as a m2, और उस मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ अभी, I want to use a sum statement. Okay, like I'm saying there m2 method is executed. Okay. Also I want to use the variables a and b. Can I use that variable here? Yes, sir. Definitely, because we have extended, right? So see, I'm not getting any error. Okay, I'm not getting any error. Okay. अभी तक यहाँ तक क्या हुआ है, मैंने क्लास सी एक बनाया था, इसमें मैंने कुछ वेरिएबल और मेथड दिए. उसी वेरिएबल को मैंने एक्सटेंड करने के बाद यूज किया है लाइन नंबर 18 में. एंड these are the independent variable and method from the class D, another class, जो मैंने यहाँ पे D क्लास बनाया. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? दिस इज व्हाट सिंपल अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. इट्स लेवल सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ये कंसेप्ट है. ओके, नो इशू. बट वी आर सीइंग दी MLI, मल्टी लेवल inheritance. Okay, so for that reason again I need to create one more class, है ना. अब इस क्लास की बॉडी कहाँ से यहाँ तक है, राइट. Okay, so after line number 21 I'm going to create one more class. Okay, so class CD. Now I will try to make a class E. Okay, now I want the properties from both previous classes, class C and class D. So what I will do, I will extend the previous class. Extends the previous class, that is class which one? D. So ultimately it will take the properties from C as well, because we have already extended the class C in class D, right? Okay, now I will define the body for this class. I will define the body for this class. So here also I am giving some method public void m3, so one method. Okay, and in this I want to type some statement. Okay, so first usual statement I will give as, sorry, m3 is executed. The m3 method is executed. Okay, now see, as I have used the keyword extends, so I can simply use the variables also from the previous class. Okay, the previous class example, for example, I can use here x plus y, no error. X and y belongs to this class, class D. Okay, similarly I can use the variable a plus b, which also belongs to class C. देखिए, तीन क्लास है हमारे पास, क्लास C, क्लास D, क्लास E. We have three methods, m1, m2, m3, and also class C and D has some variables defined. A, B यहाँ पर है, x, y यहाँ. बट जब मैंने क्लास D में एक्सटेंड किया क्लास C, तो मैं देखिए उसके वेरिएबल यहाँ पे इजीली यूज कर सकता हूँ, A, B. सिमिलरली यहाँ के जो वेरिएबल है x and y, that I am easily going to access in class E, as I have already extended class D. Okay, now I want to execute this code. So definitely what we require to execute the code? Main method. Main method. Okay, we will define main method here. Ultimately, because class E has connectivity with all the classes, है ना.
क्लास ई क्या है, इसकी कनेक्टिविटी सभी क्लासेस से बनी है। ओके ओके, आई विल डिफाइन द मेन मेथड हियर। ओके, आफ्टर दिस देखिए ये क्या है, M3 की बॉडी है। सो आफ्टर दिस मेथड ओनली आई कैन डिफाइन एनी अदर मेथड, दैट इज माई मेन मेथड। तो सिंटैक्स public static void main in bracket string args array। So I am in now main method and line number 31 is in main method। Okay, now I will create an object of this। देखिए मुझे अभी क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। यहाँ तक तो ये सब ठीक था, बट अब मुझे एग्जीक्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, दिस क्लास राइट। अब मुझे क्या इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सी और डी का नहीं बनाने की जरूरत है, मुझे बस एक ही बार बनाना है ऑब्जेक्ट, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर क्लास ई। सो व्हाट इज द सिंटैक्स, class name e, any variable you want, for example obj1, it's your variable, is equal to new, again the class name, this one। Okay, so we have created the object of the class e। Okay, object of the class e। now I want to access the methods। देखिए मेरे पास तीन methods है already, right? this m1 m2 and m3, correct? m1 m2 and m3। okay, I will use that object obj1, sorry, dot। now see, you can easily get the methods as well, right? okay, see first मुझे a b x and y ये क्या दिखाई दे रहा है, variables, right, which we have created। see, a is a variable type int present in class c, same we have created the b variable in the same class that we can access। okay, now we have method as well। see, m1 method from class c, m1 method from class c, again m2 method from class d, and also m3 method from this current class। okay, so okay, I will try to execute m1। okay, next देखिए अब मैं बस m1 को कॉल करता हूँ। okay, and I will try to run। what is the expected output here, क्या मिलेगा मुझे, M1 method is executed. only whatever is in m1 method। okay, we'll try this। oh, sorry, okay, we are getting an error। can anyone guess what error we are getting? why we are not getting like run as a Java application, right? For example, in this class, previous class, single level inheritance, right click, run as one Java application। okay, but here in this class we are not getting it, any reason guys? See, as per the syntax there is no error। if you are seeing any error in the syntax, you can find there is no error, I will show you also। okay, this is approximately all the program। okay, is there any red mark you are seeing or any error, for example error like this, this is the error, you have to insert the symbol to complete the sentence। okay, but मुझे ऐसा कोई error तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। tell me, those who know Java, do you have any guesses for this? why we are not getting the option as run as a Java application, though there is no any error in syntax?
Any guesses? Yes or no? Can you hear me? आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. Any guesses? Have we done any mistake? No. Okay, I will सर tell you. Yeah, go ahead. पिछली वाला दिखाओ ना प्रोग्राम. Okay, this one. Yeah. Because we are mentioning class C as our file name and main method is present in another class. Very good. So here see what is happening. What is the rule here? First of all, understand. See, previously, for example, in control statement, I will go. Okay. Observe carefully. Here, what is the class name? Else underscore if underscore cond. See, the file name or the program name has same name. You can see name is same. Okay. Second, if underscore cond, same file name, same class name. Okay. Here again, if or else condition, the name cond, same program name, same class name. Okay. Here as well, same class name, same file name. Program is saved in terms of file or a program dot java program. So you can see the same name, class name or ये same है. Okay. But here in this example, see, here we are having multiple classes in one program only. Okay, Java give us the provision like आप एक प्रोग्राम में, एक सिंगल प्रोग्राम में मल्टीपल क्लास क्रिएट कर सकते थे. अभी तक मैंने क्या किया था, एक प्रोग्राम में एक ही क्लास था, बट यहाँ पे हमारे पास क्लास सी है, क्लास टी भी है और क्लास ई भी है. ओके. नाउ द जावा विल गेट कंफ्यूजन कि ये प्रोग्राम जब तो हमने क्लास क्रिएट किया था तो सी नाम से क्रिएट किया था. ओके, सो वी आर गेटिंग सी. बट नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर? अब उसके पास कंफ्यूजन है कि यहाँ पे क्लास सी भी है, क्लास टी भी है और क्लास ई भी है. ओके. सो वी विल ट्राई कि आपने जो रीजन बोला था अभी कि वी आर हैविंग मेन मेथड इन क्लास सी, so can we go and change the name of this class as a class E? Yes or no? Yes, sir. Okay, we will do it. Do you know how to rename any class? Anybody? Refactor. Yeah, we are having option refactor. Okay, just right click on that class which you want to rename. So class C जो है already exist, उसको मुझे rename करना है. So right click on this, we will get option refactor. ओके, आपको यहाँ पे डायरेक्टली कोई रीनेम का ऑप्शन नहीं मिलेगा. ओके, जस्ट यू विल राइट क्लिक और आप ढूंढोगे रीनेम, तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा दोस्तों. यू हैव टू फाइंड ऑप्शन रीफैक्टर. जस्ट hover over the mouse on refactor, you will get one option rename. Also there are shortcuts also. Okay, you can use all this also or go with the options rename. Now here I will rename it as a class E, right? You are saying class E has main method, correct or not? Yes, sir. Okay, I will update it. Finish it. No issue. Finish. Okay. Yeah. Still any error, or we are good to go? No, sir, we can't Yeah. So what is the rename error? this file. Sorry. Actually, sir, in this program here is one public class file. Okay, sir. That's why Okay. we have to give the public class name of the files. But main method is not in this public class. But Main method तो मेरी यहाँ पर है ना, क्लास सी में. But class A तो डबल हो गया. according to this Java, क्लास ए डबल हो गया. सॉरी, क्या बोला? क्लास E. ई. ये डबल है. पब्लिक क्लास में भी E आ गए. जिधर एरर मेंशन है वहाँ पे भी E आ गया.
देखिए सिंपल रूल अगेन आई विल टेल यू इन अ वन प्रोग्राम यू कैन क्रिएट मल्टीपल क्लासेस ओके क्लास ई हमने बनाया है क्लास डी क्लास ई भी बना सॉरी okay here we are having multiple names okay with these things already defined okay so here we give the name okay I'll tell you no issue see the rule is when we have multiple classes in one program then only one class can be the public देखिए यहाँ पे देखिए पब्लिक ये जो ऑलरेडी मैंने क्लास क्रिएट किया था ना बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक था राइट बिकॉज ऑफ सम बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन नाउ आई विल रिमूव दिस पब्लिक कीवर्ड okay I will remove this public and which class needs to be public in which there is a main method available so here main method is available in this class E so can I go and make it as a public Yes, sir. okay now what error we are getting type E is already defined हेलो सर yeah सर जो आपने रीनेम किया सर वो सभी क्लास को ये हो गया ना तो फर्स्ट क्लास को चेंज उसका नेम देना पड़ेगा ना yeah this should not be okay we will make it as a F so here it will extend F now okay yes यस सर यस okay wait a minute okay hey sorry can you hear me now Yes. Yes. so now it's okay right we have another class which is not public that is class F again I have changed the name here also okay so here D is extending class F which is not public again class D we have created which is not public which is inherited in next class E now class E I have made it as a public and also it has the what main method now it's okay now we are getting the option like one Java application yes or no guys Yes, sir. Yes. okay now if I will run this code what I will get I will get only m1 method see in line number 32 I'm just calling m1 method so we'll try exactly what we are getting okay m1 method execute okay यहाँ पे spelling mistake है no issue m1 method is executed okay again I will try to run m1 method is executed similarly I want to call other method m2 which is present in this class D okay this m2 method can I go ahead and call it Yes. okay I will get predefined option also see m2 method is there right you can type or you can just double click on this it will call that method similarly I want to call the another method which is already present here m3 outside the main method now I will try to run this see m1 method that has statement as m1 method executed in m2 method I have the statement in line number 17 as m2 method is executed and 30 a and b right we have already added these two variables from the previous class उसका addition आ गया है 30 next m3 method में क्या है again we have line number 25 as a m3 executed xy का addition 30 40 that is 70 and also a plus b again 20 so this represent the MLI मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कितने बनाए हैं आई हैव जस्ट क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट टोटल क्लास कितने यहाँ पे 3. 3 क्लासेस
So in practice, if any size of the like class or program will increase because of number of classes, don't get worried. We have to use only one time object. एक ही टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको बस. ओके, दैट टू द क्लास फ्रॉम द मेन मेथड, है ना. ऑब्जेक्ट आपको किसका बनाना है, जहाँ पे मेन मेथड है, और मेन मेथड से ही आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. यू कैन राइट एनी कोड आउटसाइड द मेन मेथड, बट इट डजंट मैटर. आप उसको कॉल करना पड़ेगा मेन मेथड से ही. दिस इज माय मेन मेथड. ओके, so this represent the MLI, multi-level inheritance. Any doubt in this? No. No. SLI और MLI में डिफरेंस पता चला. सिंगल लेवल में एज पर डेफिनेशन ओनली वन क्लास is acquiring the property of other class, that is your parent class. एक ही parent है और एक ही child है, right? इसका और होता है, this is A is also called as a parent class, और B को हम बोलते हैं child class. इसको अगेन बोलते हैं कोई सुपर क्लास भी बोलते हैं. पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी बोलते हैं, और इस चाइल्ड क्लास को सब क्लास भी बोलते हैं. ओके, only the names are different but the meaning is same. So here only one parent, one child. Okay, in this we are having three classes, है ना. So this is the parent and this is the child, but next time again this becomes as a parent for any other child classes. So we are having like three levels, like three generations we can say: grandparents, parents, and then children. So three levels or two levels we can say, 1, 2 and 3. That's why it's called as a multi-level inheritance, MLI, simple. यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? Any doubt in this? No, right? No. Okay. Now next we are going to see the concept of MPI, multiple inheritance. Okay, multiple inheritance. But Java will not directly implement this multiple inheritance. इसको support नहीं करता है Java. Okay, इसका मैं question, interview question और answer बताऊंगा. But as of now just understand कि Java directly आपको multiple inheritance को support नहीं करता है. He can by default support the SLI, single level inheritance, as well as multi level inheritance जो हमने अभी देखा था. एक क्लास से एक क्लास में और किसी दो क्लास से अगेन थर्ड क्लास में. ओके, MLI एंड SLI को सपोर्ट करता है बाय डिफॉल्ट बाय यूजिंग दिस एक्सटेंड कीवर्ड. But Java by default does not support the MPI, multiple inheritance. For that, what we have to see? Anybody knows? Interfaces. Okay. अभी ये कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, बिकॉज इसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा इंटरफेस क्या है एंड देन MPI. सो एज ऑफ नाउ ये जो थर्ड इनहेरिटेंस है इसको मैं बाद में बताऊंगा. ओके, but next the title what we can get is next oops concept, that is polymorphism. Anybody knows what is polymorphism? कभी नाम सुना है polymorphism? Yes. Where you have heard this? In development, sir. Development. Okay. Okay. देखिए, जस्ट वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए तो और इजी हो जाएगा. पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म, मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म. ओके, दैट मीन्स देयर इज ओनली वन नेम फॉर मेनी फॉर्म्स. देयर इज ओनली वन नेम फॉर मेनी फॉर्म्स. सिंपल एग्जांपल, देयर आर मल्टीपल गेम नेम्स. आपको इन मार्केट में यू कैन फाइंड देयर आर मल्टीपल गेम नेम्स. But if I want to categorize, I will just say them names, like games. Okay, one name से मुझे उसको कॉल करना है तो मैं उसको सिंपल क्या बोलता हूँ? It's a game. Okay, so simple इसका मीनिंग होता है कि there is only same name we are giving, but it occurs in multiple forms. Multiple forms होंगे, अलग अलग forms होंगे उसके. Okay, so here in Java under polymorphism
it has a two types. It has a two type, method और सिंपल. इसको हम पहले समझ लेंगे. ओवरलोड एंड ओवरराइड. ओके, ये दो कंसेप्ट आते हैं इसमें पॉलीमॉर्फिज्म. अब इसके नाम देख लीजिए, समझ लीजिए. You can find overload as overloading, meaning same. Override as overriding, दोनों का मीनिंग सेम है. ओके. ओवरलोड को कभी कभी किसी को कोई बोलता है मेथड ओवरलोड, इट इज सेम. फॉर ओवरराइड, मेथड ओवरराइड इज आल्सो सेम मीनिंग. ओवरलोड को मेथड ओवरलोडिंग भी कहा जाता है. सिमिलरली मेथड ओवरराइडिंग भी कहा जाता है. Okay, and the one complex name which is like easy to understand, overload को, this is overload और override को, this overload is called as a compile time polymorphism. compile time है ना, और इसको कहते हैं रन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम. ओके, अब इसका मीनिंग देखो क्या होता है. व्हाट इज कंपाइल एंड व्हाट इज रन? हैव यू सीन दिस टर्मिनोलॉजी बिफोर? गंदा है ना हाथ में. If anyone is unmuted, can you please mute yourself? देखिए, हमने एक कंसेप्ट देखा था, एग्जीक्यूशन टाइम और कंपाइल टाइम. पता है किसी को? So compile time is when our source code converted to the bytecode, sir. See, we have seen this concept like accepting the values from keyboard or entering the values during runtime. Runtime मतलब जब एग्जीक्यूशन होता है ना. दो कंसेप्ट मैंने बताए थे यहाँ पे. Why we are using the Eclipse? To write the code and to execute the code. जब राइट कर रहा था मतलब कभी कभी हमने प्रोग्राम में इटसेल्फ डिफाइन किया था. ड्यूरिंग कंपाइलेशन ओनली वी हैव डिफाइन वेरिएबल ए और उसकी वैल्यू होनी चाहिए 20, वेरिएबल बी उसकी वैल्यू होनी चाहिए 30. दैट वी हैव डिफाइंड ड्यूरिंग कंपाइलेशन, मतलब व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम. एंड उसी वैल्यू को मुझे डिफाइन करना था ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग रन टाइम. सो आई यूज दिस स्कैनर क्लास, राइट. इट वाज एक्सेप्टिंग द वैल्यूज फ्रॉम कीबोर्ड, मतलब कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और उस टाइम पे आप कुछ वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे थे, है ना. तो सेम यहाँ पे भी उसका मीनिंग वही बनता है, स्पेशली फॉर दिस पॉलीमॉर्फिज्म. तो ओवरलोड करते समय क्या होगा कि मेथड ओवरलोडिंग है मान लीजिए. तो मेथड ओवरलोडिंग करते समय मैं कंपाइल टाइम में ही उसको ये ओवरलोड का कंसेप्ट यूज करूंगा व्हाइल राइटिंग द कोड इटसेल्फ. एंड दिस ओवरराइडिंग कंसेप्ट विल हैपन ड्यूरिंग रन टाइम. ये कंसेप्ट कब हैपन होगा? जब आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का टाइम होगा, उस टाइम पे ये कंसेप्ट एग्जीक्यूट होगा. कौन सा? ओवरराइड का. ओके, सो एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप है. वन इज ओवरलोड, ओवरराइड, और इसके जितने मल्टीपल नाम बताए वो सब कॉमन ही नाम है. फॉर एग्जांपल ओवरलोड की बात करूँ तो मेथड ओवरलोड, मेथड ओवरलोडिंग और सिंपल ओवरलोडिंग, और दिस इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है. ओके, सो इन इंटरव्यू यू मे गेट कंफ्यूज्ड विद नेम्स इटसेल्फ. ओके, सो ये अलग अलग नेम है, बट एज ऑफ नाउ वी विल जस्ट सिंपल अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवरलोड एंड व्हाट इज ओवरराइड. व्हाट इज ओवरलोड एंड व्हाट इज ओवरराइड. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Any doubt here? Sir, polymorphism explain कीजिए. Okay. इन पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, आपके पास एक ही नाम होगा बट उसके मल्टीपल फॉर्म होंगे. देयर इज ओनली वन नेम बट मल्टीपल फॉर्म्स. ओके, फॉर एग्जांपल आई विल शो यू. देखिए, एग्जांपल फॉर ओवरलोड. दिस कंसेप्ट समझ लीजिए. ओके, हियर द मेथड नेम, here the method name will be same
method name will be same, but signature is different. But here signature is different. अब signature इसको हम simple argument भी बोल सकते हैं. As of now you just understand what is signature. So एक type का argument होगा. For example मेथड आपकी एक मेथड है m1, ओके, और एक मेथड है आपकी सेम नाम की m1. तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि यहाँ पे आपके पास दो मेथड है और दोनों मेथड के नाम क्या है, सेम है. बोथ मेथड बिलोंग्स द सेम नेम. अब इसमें क्या है, मुझे आर्ग्यूमेंट देना है, इसको हम कहते हैं सिग्नेचर. आर्ग्यूमेंट देता है इनसाइड द ब्रैकेट. जैसे कि ये मेथड रन करने के लिए मुझे दो आर्ग्यूमेंट चाहिए. आई एम गेटिंग टू आर्ग्यूमेंट लाइक इंट ए एक मेरे पास आर्ग्यूमेंट है, और मान लीजिए इंट बी. ओके, सो हियर आई एम गिविंग द टू सिग्नेचर और टू आर्ग्यूमेंट. m1 के लिए इंट ए और इंट बी. अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सिग्नेचर डिफरेंट होगी. सिग्नेचर डिफरेंट होगी मतलब क्या होगा, मान लीजिए इंट एक्स मैं एक एलिमेंट दे रहा हूँ, अगेन इंट वाई एंड अगेन इंट जेड. मीनिंग सिंपल. देखिए नाम दोनों का सेम है, m1 m1, ये मेथड सेम होगी, बट इसके सिग्नेचर डिफरेंट है. मतलब इस मेथड को रन करने के लिए मैं दो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, और सेम मेथड को मैं और एक बार रन करने के लिए तीन आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ. सो दैट बिकम्स ओवरलोड. और सिंपली आप समझ सकते हो कंसेप्ट से कि इन ब्रैकेट में मैंने एक बार दो चीजें बताई है, अगेन ओवरलोड करके उस सेम ब्रैकेट में मैंने तीन चीजें बताई है. उस चीजों को सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिग्नेचर या फिर आर्ग्यूमेंट कहा जाता है. मतलब मेथड का नेम सेम होगा, बट मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या करूंगा, डिफरेंट कर दूंगा. इन ओवरराइडिंग द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल. यहाँ पे आपका मेथड नेम एंड सिग्नेचर बोथ आर सेम. यहाँ पे क्या होगा, बोथ विल बी सेम. फॉर एग्जाम्पल m2 मेथड एंड m2 मेथड भी सेम है, एंड आर्ग्यूमेंट भी इसको मैं सेम करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इंट आर एंड इंट आर. Now the challenge here is how the system will understand which method you are talking about. देखो ये दोनों मेथड अलग अलग क्लास में होने वाली है. It will not be in same class. सेम क्लास में होगा तो आपको तभी कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा कि मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिकॉज इट लुक्स सेम. बट ये कोई अलग क्लास में होगा, मेथड विथ सेम सिग्नेचर और सेम मेथड एंड सेम सिग्नेचर इन अदर क्लास. अब होगा कंफ्यूजन सिस्टम को कि आपको अगर मेथड आप m2 कॉल कर रहे हो तो किसकी कॉल कर रहे हो, क्लास A की या क्लास B की. दैट वी विल सी. बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड ओवरलोड मतलब क्या है. मेथड नेम विल बी सेम बट सिग्नेचर विल बी डिफरेंट, एंड इन ओवरराइडिंग बोथ मेथड नेम एंड सिग्नेचर बोथ शुड बी सेम. ओके, एग्जांपल भी देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे. इट्स वेरी सिंपल. मेथड नेम जो हम अभी तक दे रहे थे लाइक m1 m2 द यूजर डिफाइंड मेथड, वो नाम आपको दोनों में सेम रखना है. बस उनके पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट आपको वेरी करनी है. यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे तीन है, कोई और होगा, कोई और होगा. ओके, गॉट इट. जीरो इन डाउट पूछा था, उनके लिए क्लियर है? यस, नो? Yes, sir. Okay, so we have seen this two inheritance concept, SLI single level inheritance and multi level inheritance, MLI. Okay, I have skipped as of now the MPI multiple inheritance, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रू इंटरफेसेस, है ना. तो जब मैं इंटरफेस का कंसेप्ट बताऊंगा दैट टाइम आई विल कवर दिस MPI. नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द नेक्स्ट कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म. अब इस कंसेप्ट के जो एग्जांपल है थ्रू प्रोग्रामिंग दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर ऑन मंडे. Done? Any doubt till this? Yes, no? No, sir. No, sir.